Hello everyone, welcome to Guidely. This is Aditya. I'm going to discuss top 10 interview questions for IDBI JM, and definitely in your interview also you are going to expect at least 2 to 3 question out of these 10. In 10 में से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे because every year these are the most repeated questions. So let's start the session. Before moving toward the content, I just want to give you the information about the Telegram group, freely available. You can join this group and connect with me in case of any question confusion. My interview batch is already live on the Guidely. Classes are going on already. Most of the questions has been not sessions has been done, so you can join the batch, prepare well, practice well. All the answers of these 10 questions you will be able to find in detail within the batch. चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ. पहला क्वेश्चन होगा about banking industry, like why you want to join bank. If you are from engineering background or you are from the non-commerce background, agriculture, bio, pharma, any sector, you will definitely expect this question that why banking? Why not your own sector? Why didn't you have tried in the software industry? If you are a software engineer, if you are MBA guys, then they will ask you why not marketing and all other areas, why you want to come to the banking industry. ये question होगा. If you are even from the commerce background, वो आपसे पूछेंगे कि why not PSB, why private bank क्यों join करना है, why not PSB, why IDBI. So directly indirectly this question you will definitely expect. Talk about the growth, talk about the comparison, the growth, the opportunities which are available in your own sector, उसके बारे में बात करो. That less number of opportunities are available in my sector, growth opportunities are available in less in my sector compared to banking. Banking is providing better opportunities. तो एक comparative form में आपको आंसर फ्रेम करना है. Talking about your sector also, talking about the banking sector also, keeping banking sector as a बेटर प्रोफेशन और बेटर अपॉर्चुनिटी ऑप्शन. तो इस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना है. सेकंड क्वेश्चन होगा हाउ डू बैंक जनरेट प्रॉफिट, या फिर वो आपसे पूछेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बैंक. यू वांट टू कम टू बैंकिंग इंडस्ट्री, हाउ डू बैंक परफॉर्म बैंकिंग फंक्शंस, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक, हाउ डू बैंक जनरेट प्रॉफिट, व्हाट आर द एसेट्स ऑफ बैंक, लायबिलिटीज ऑफ बैंक. If you are a commerce background student, BCom, MCom, they will ask you explain the balance sheet of bank. So ये आपके क्वेश्चंस हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली पूछे गए. थर्ड आता है you have applied for the position of JM. What are the roles and responsibility you are going to deal with on the position of JM? जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई किया है, क्या रोल्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, क्या फंक्शन आप परफॉर्म करने वाले हो. ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे. एक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज डायरेक्टली मीनिंग इज व्हाई वी शुड हायर यू. दे विल आस्क यू इन अ डिफरेंट मैनर. What are the qualities to be there in a banker? What do you think? A good banker should have what qualities? Do you feel that you are holding that qualities? एक अच्छे बैंकर के क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए? आपको लगता है आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं? आपको लगता है why we should give the preference to you compared to other candidates sitting outside? बाकी बच्चे जो बाहर बैठे उनके कंपैरिजन में आपको हम प्रेफरेंस क्यों दें? आपके अंदर ऐसे क्या क्वालिटीज हैं? तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल डेफिनेटली एक्सपेक्ट. ये एक क्वेश्चन हो गया, बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर आ रहा हूं. फिफ्थ है व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री. अब मेजर चैलेंजेस में डोंट से एनपीए. एनपीए इज एट द लोएस्ट लेवल ऑफ इट्स हिस्ट्री. तो एनपीए बड़ा चैलेंज नहीं अभी करंट सिनेरियो में. इट विल बी डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज जो अभी के करंट में डेट में है. कॉम्पिटिशन विद द फिनटेक, कॉम्पिटिशन विद द अदर बैंकिंग इंडस्ट्री. तो ये आपके मेजर चैलेंजेस है. सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर बिकॉज 24/7 सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर इन अ फ्रीक्वेंट वे, प्रॉपर वे. तो ये सारे चैलेंजेस हैं करेंटली बैंकिंग इंडस्ट्री के. टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बड़ा चैलेंज है. तो ये चैलेंजेस हैं. ठीक है, एनपीए नहीं है. व्हाट डू यू नो अबाउट आईडीबीआई, क्योंकि आईडीबीआई के लिए जा रहे हैं तो आईडीबीआई के बारे में क्या जानते हैं. बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है. दे विल नॉट आस्क यू टेल मी अबाउट द प्रॉफिट एंड ऑल. डायरेक्टली दे विल आस्क यू व्हाट डू यू नो अबाउट आईडीबीआई, व्हाट इज आईडीबीआई, व्हाट डू यू नो अबाउट द बैंक. ये पॉइंट हो गया. सो यू कैन गिव द कंप्लीट ब्रीफ अबाउट आईडीबीआई, व्हेन इट स्टार्टेड, व्हाट इज द करंट प्रॉफिट एंड ऑल, व्हाट इज द ओवरऑल ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए ऑफ द बैंक, रीसेंट प्रॉफिट लॉन्च्ड बाय, टैगलाइन. ये सारी चीजें आपको रेडी करके रखनी है अबाउट आईडीबीआई. What are the recent updates in the banking industry? Banking में भी recent updates क्या हैं? So you should at least prepare 3 to 4 very important circulars of the recent time. Like what are the new guideline for loan recovery? Loan recovery के नए guideline क्या है? What are the new guideline for BSBD account? तो ऐसे 2-3 circular ready करके रखो, which is you need to prepare from your own. They will be asking you any update. Are you covering the recent update in the banking? So you can tell about 1 or 2 important circulars. आप बता पाओ easily detail में. Then if your branch is not achieving the target, what will be your steps? Or they can ask the same question in the manner that you have been given a branch which is a loss making branch, how you will convert into a profitable branch. आपको एक ब्रांच दी गई जो कि एक लॉस मेकिंग ब्रांच है, प्रॉफिटेबल कैसे बनाओगे. You have given a branch which is
not achieving the target from 3 quarter 4 quarter, how you will create the profit in that branch, what will be your strategy. You have been given a new branch which is started recently, there is no customer, how you will start the customer service from day one, how you will gain the first customer of your branch. तो ये आपके कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वो इसी बेस पर क्रिएट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 तक आ गया हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 9, what will you do if you get chance from any public sector bank in future? After joining IDBI, if you get the option from IBPS, if you get the option from SBI to join, what will be your call? I've already given the answer of this question on YT itself in previous video. I'll give you in short. We need to keep our answer a little bit, means we should not answer directly that, sir, I will join PSB, or sir, I will stay with IDBI. Our answer should be, sir, I will analyze. First of all, sir, after joining IDBI, I am not in plan to write any external examination. Still, I get any such opportunity from any PSB, I need to analyze at that point of time what position I am holding in IDBI, where I am located, what is my posting, and what are the roles and responsibility I am dealing with, what is my position within my current organization. Then I need to compare all the things with the next organization. Then I will discuss with my seniors also, with my family members also. There are lots of aspects, sir, which I will analyze, and accordingly I will take call. आपको ये नहीं बताना है what is the call you will take. Accordingly I will take call. तो वो समझ जाएंगे, yes, you have a diplomatic answer and you are smart enough to give the answer. इस तरीके से आंसर करोगे. एक और पॉइंट आता है, tell us the current affairs news of last 3 to 4 days. 3-4 दिन पुराने कुछ 4-5 न्यूज बता दीजिए. Always remember, you need not require 3 month, 4 month, 6 month current affairs for the interview. You need to cover very, very near. So if you will start your current affairs news from June 11th till your interview, अगर आप 11 जून से लेकर आपके इंटरव्यू तक का कवर करते रहे हो ना इंटरव्यू करंट अफेयर्स, that is more than enough. So till interview started from 11th of June, if you will cover the current affairs, most important news of national importance, where India is there in the news, and news of international importance, ये दो चीजें कवर करो. Remaining, my batch is live. Join it without hesitation, prepare well, practice well, and go for the interview confident. You can join this Telegram group as well for getting any free support from my side. I am always providing that support as well. So that is available in this Telegram group. Please like the video, share with your friends so they can also join it. Thank you for joining the session. Take care. Jai Hind. All the best.